वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 8 पीजेंट्स जमींदार एंड द स्टेट के पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू। ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और स्कोर को डायरेक्ट बूस्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि लास्ट के एमसीक्यूज ही वो पॉइंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपका स्कोर एवरेज रहेगा या टॉपर लेवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस चैप्टर मेनली डील्स विद Option A, urban life. Option B, agrarian society under the Mughals. Option C, trade routes. Option D, religious movements. And the correct answer is option B, agrarian society under the Mughals. क्योंकि चैप्टर का फोकस खेती किसान और स्टेट रिलेशंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल एग्रेरियन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी माइनिंग। And the correct answer is option C, agriculture. अगला क्वेश्चन, the primary producers in Mughal agrarian society were जमींदार्स, मनसबदार्स, peasants, merchants. And the correct answer is option C, peasants. Next question है, which class collected land revenue from peasants? Artisans, जमींदार्स, traders, Sufis. And the correct answer is option B, जमींदार्स. Next question है, peasants were known as रैयत्स, जागीरदार्स, मनसबदार्स, आमिर्स. And the correct answer is option A, रैयत्स. अगला important question, जमींदार्स were government officials only, landowners with hereditary rights, religious leaders, foreign traders. And the correct answer is option B, landowners with hereditary rights. Next question है, which Mughal emperor introduced major revenue reforms? Option A Babur, option B Humayun, option C Akbar, option D Aurangzeb. And the correct answer is option C, Akbar. Next question है, Akbar's revenue minister was, and the correct answer is option A, Tomarmal. Next देखिए, the revenue system introduced by Tomarmal was called Ikta system, Mansab system, Zabt system, Zagir system. And the correct answer is option C, Zabt system. Next देखिए, Zabt system was mainly practiced in Deccan, Bengal, Central provinces, North India. And the correct answer is option D, North India. Next question है, land revenue was usually collected in the form of labor, cash, share of produce, taxes on trade. And the correct answer is option C, share of produce. Next देखिए, which crop was considered cash crop in Mughal India? Rice, wheat, cotton, millet. And the correct answer is option C, cotton. Next question है, which of the following was not a crop grown by peasants? Wheat, rice, indigo, tea. And the correct answer is option D, tea. Next देखिए, जमींदार्स maintained private armies, foreign relations, temples only, schools. And the correct answer is option A, private armies. Next question है, जमींदार्स used armed retainers mainly to fight Mughals, collect revenue, protect peasants, trade. And the correct answer is option B, collect revenue. Next देखिए, which document provides detailed information on Mughal agrarian system? Option A बाबरनामा, option B अकबरनामा and आईन अकबरी, option C तुज़ुक जहांगीरी, option D हुमायूंनामा. And the correct answer is option B, Akbarnama and Ain Akbari. Next question है, Ain Akbari was written by, and the correct answer is option B, Abul Fazl. Next देखिए, Ain Akbari gives information about only wars, administration and economy, religious beliefs, architecture only. And the correct answer is option B, administration and economy. Next question है, the Mughal state encouraged peasants to
Option A, leave land. Option B, expand cultivation. Option C, stop farming. Option D, revolt. And the correct answer is option B, expand cultivation. Next देखिए, new lands were brought under cultivation by clearing forests, trade, wars, mining. And the correct answer is option A, clearing forests. Next question है, peasants revolted mainly due to religious reasons, excessive revenue demand, trade laws, climate only. And the correct answer is option B, excessive revenue demand. Next देखिए, which group often supported peasants' revolts? Traders, zamindars, priests, artisans. And the correct answer is option B, zamindars. Next देखिए, why did some zamindars resist Mughal authority? Option A, religious conflict. Option B, loss of privileges. Option C, foreign invasions. Option D, language issues. And the correct answer is option B, loss of privileges. Next देखिए, Mughal state viewed zamindars are enemies only, allies and rivals, slaves, foreigners. And the correct answer is option B, allies and rivals. Next question है, which term refers to land grants given to nobles? Option A, इक्ता. Option B, जागीर. Option C, खालिसा. Option D, वक्फ. And the correct answer is option B, जागीर. Next question है, जागीरदार were paid through cash salary, trade profits, revenue from जागीर्स, gifts. And the correct answer is option C, revenue from जागीर्स. Next question है, peasants' life depended heavily on option A, trade routes, option B, monsoon, option C, foreign trade, option D, industry. And the correct answer is option B, monsoon. Next देखिए, famines occurred mainly due to wars only, revenue system, crop failure and drought. Option D, trade loss. And the correct answer is option C, crop failure and drought. Next question है, why did Mughal state try to maintain balance in revenue demand? Option A, fear of revolt. Option B, to ensure continuous cultivation. Option C, religious duty. Option D, foreign pressure. And the correct answer is option B, to ensure continuous cultivation. Next देखिए, which statement about peasants is correct? They were slaves, they owned land fully, they had customary rights, they paid no tax. And the correct answer is option C, they had customary rights. अब आ गई है स्कोर बूस्टर एमसीक्यूज। यहीं से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में रियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ध्यान से सुने। जमींदार्स एनहांस देयर पावर बाय रिलीजियस अथॉरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ट्रेड नेटवर्क्स, फॉरेन अलायंसेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिलिट्री स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इंक्रीज मुगल रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली? ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन बी कॉटन एंड इंडिगो, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी पल्सेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉटन एंड इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एग्रेरियन इकोनॉमी वॉज स्टैटिक, डिक्लाइनिंग, कमर्शियलाइज्ड, इंडस्ट्रियल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कमर्शियलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन ट्रैवलर्स कमेंटेड ऑन मुगल आर्मी ओनली, इंडियन एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्स, आर्किटेक्चर ओनली, रिलीजन ओनली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर क्रिटिसाइज्ड मुगल लैंड सिस्टम बिकॉज पीजेंट्स वर रिच, स्टेट owned all land, lack of private property, zamindars were powerful. And the correct answer is option C, lack of private property. Next question है, modern historians disagree with Bernier because he was biased, he lacked data, Indian peasants had rights, all of the above. And the correct answer is option D, all of the above. Next question है, which term refers to land directly under emperor? Zagir, Khalsa, Ikta, Inam. And the correct answer is option B, Khalsa.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल स्टेट रेवेन्यू वॉज मेनली स्पेंट ऑन एजुकेशन, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, टेम्पल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजेंट जमींदार रिलेशंस वर ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज हॉस्टाइल, बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन एग्जिस्टेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सोर्स टू स्टडी मुगल एग्रेरियन रिलेशंस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आईन अकबरी। Second last question है the Mughal agrarian system shows, and the correct answer is option C, complex social relations. Last question है best conclusion of the chapter is, and the correct answer is option C, Mughal state balanced power and revenue. अब जल्दी से कमेंट में अपना स्कोर लिखिए, और अगर आप चाहते हो इसका कंप्लीट एमसीक्यू पीडीएफ तो कमेंट में पीडीएफ लिखना मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।